Children, let's start our grammar class. Today we will start our 15th chapter, that is direct and indirect speech. To begin with, let's first understand what is direct and indirect speech. ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ବା ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ସିଧାସଳଖ କହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଅଥବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। whereas ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଆଉ କାହା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲି I like mangoes, that's a direct speech। ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା, if you will go to your home and you will report it to your mother that ma'am was saying that ma'am said that she likes mangoes, right? ସେଟା she ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, she likes mangoes। କାହିଁକି ମୁଟା ଏଟା ମୁଁ because I am a feminine gender, ଆଇଟା ସେଠି she ହେଇଯିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା how to write a direct speech। डायरेक्ट स्पीच लिखिबारे प्रथमे केतेटा जिंस हमको ध्यान देबाको पड़िबो। प्रथम जिंसटा होची जेतेबेले राम सेड जो कर्ता कहिला परे वी हैव टू पुट अ कॉमा देयर, ताको हमें कहू रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, कॉमा रो लेफ्ट हैंड साइड रे जोटा रहे दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तापरे हमें जो उक्तिटा कुहा गला ताको वी हैव टू पुट इट ऑन द इन्वर्टेड, से जो इन्वर्टेड कॉमा भितरे जो उक्तिटा रहिबो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो जो सेंटेंस गुडा ए फॉर्मेट रे लिखा आइथिबे दोज विल बी नोन एज डायरेक्ट स्पीच। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, रिकॉग्नाइज डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष उक्ति बा इनडायरेक्ट स्पीच को केमति चिन्हिबा। डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्टली कहला बेले बा इनडायरेक्टली चेंज करके जेतेबेले हमें लिखिबा, व्हाट यू विल राइट, वी विल हैव टू ओमिट ऑल द कॉमास हियर और सेड परे गोटे दैट आसीजिवो। हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल, राम सेड आई वर्क डेली। एको हमें केमति लिखि जे राम सेड दैट ही वर्क्स डेली। तो इट दैट आसी गला और कोनोसी कॉमा नै, सो इट इज अ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, वर्तमान आउ किछिटा बेसिक जिंस देखिबा, किछिटा रूल्स जोठी हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कला बेले व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट। एटा केमति चेंज करबा दैट वी विल डिस्कस लेटर। प्रथम आगे टिके देखि देबा केमति चेंज होची। the first thing to remember is that if the reporting verb is in the future tense or in the present tense, then there will be no change in it। कहिबार अर्थ हला डायरेक्ट स्पीच रे कॉमा पूर्वरु जदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर सेंस रे थिबो अथवा सेज किबा विल से थिबो ताहले रिपोर्टिंग स्पीच रे बा इन्वर्टेड भितरे थिबा सेंटेंस रो कोनोसी चेंज हेबो नाही। ता अर्थ मु एठी जो राम सेड लिखली एठी जदि मु राम विल से किबा राम सेज लिखि थांती ताहले आई वर्क डेली रे किबा जदि कहि मु राम सेड ही वेंट टू स्कूल, एथिरा कोनोसी चेंज आसीबनी। राम सेड दैट खाली दैट लगे की कॉमा काढी दे की सेंटेंस को आज इट इज लिखिबा को पड़िबो विदाउट रेफरिंग टू एनी टेंस चेंज। ठीक अछि, टेंस चेंज रो रूल्स को फॉलो करिवार नाही। जदि कॉमा पूर्वरु राम सेड सेज किबा राम विल से थिबो ताहले खाली दैट लिखि की हमें सेंटेंस को आज इट इज लिखि देबा। क्लियर? ओके, जिंस सेकंड रूल जोटा मन रखिबा कथा दैट इज राम सेड, ए जिंस रो कोनोसी चेंज आसीबो नाही। ए प्रथम कॉमा पूर्वरु थिबा जिंस रे भी कोनोसी चेंज आसी नाही, किंतु सेंटेंस रो स्ट्रक्चर हिसाब रे हमें टोल्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, क्लेम्ड इत्यादि लिखि पारू। if the direct speech is in a question format, then we will write question। राम सेड जगह हमें लिखिबा राम क्वेश्चन। जदि से हमको ऑर्डर दोथुओ राम सेड प्लीज गो देयर, राम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। ठीक अछि, सेही सब जगह रे सेड चेंज हेबो, अदरवाइज तार टेंस केबे भी चेंज हेबनी। ओके, नेक्स्ट रूल, जदि एटी राम सेड टू सीता किंबा हरि सेड टू गोपाल ए टाइप रे सेंटेंस थिबो कॉमा पूर्वरु, देन while converting it to indirect speech we will have to write told, Ram told Sita, Hari told Gopal, like this। Clear? Next is inverted भितरे थिबा universal truth जदि थाए, universal truth थिबा स्टेटमेंट बा habitual statement जोटा नित्य व्यवहार्य स्टेटमेंट्स थिबो that will never change। Okay, I have taken an example, teacher said sun rises in the east। it is a nirad satya, it's an universal truth। Okay, so what you will write, teacher said that sun rises in the east।
इनडायरेक्ट रे कहला बेला हम से लिखवा एथिरे कोनोसी रूल कोनोसी टेंस वाला रूल फॉलो करिवार नाही. If a teacher said that 2 and 2 makes 4, that's a universal truth. Somewhere 2 and 2 will make 4 only. So what you'll write? Teacher said that 2 and 2 makes 4. Just omit the commas and write that. Okay. Now let us see. Direct speech रे कौन थिले, indirect speech रे tense रे को भलिया परिवर्तन आसे हम सेटा discussion करिवा, which is very important from the examination point of view. Okay. So the first example is जदि डायरेक्ट स्पीच रे द टेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जदि सिंपल प्रेजेंट रे थिबो ताले इनडायरेक्ट रे सेटा सिंपल पास्ट हे जिवो. सीता सेड आई राइट लेटर्स. इनडायरेक्ट रे कोन हबो? सीता सेड दैट सी रोट लेटर्स. देखो सीता सेड, सीता बिंग अ गर्ल, आई एठी सी हे जिवो काहे सीता गोटे झियो अछि, सो अकॉर्डिंगली फेमिनाइन जेंडर आई जगह रे लागि जिवो सी. सो सीता सेड दैट सी रोट लेटर्स. राइट पास्ट टेंस रोट, सो simple present will become simple past. Clear? Next sentence, simple past, direct speech रे जदि simple past रे थिबो ताले indirect speech रे that will become past perfect. Okay. So Sunil said I brought a pen. Okay, bring the past tense brought. So in indirect speech what we will write? Sunil said that, brought rata past perfect हे जिवो तणो had brought. Sunil said that he had brought a pen. Clear? Next one, if indirect speech that is present continuous, then in indirect speech that will become past continuous. Present continuous is Soma said Radha is working. So in indirect speech what you will write? The present continuous will become past continuous. So is working, was working हे जिवो. देखो एटी सोमा निज विषय रे कहूनी, राधा विषय रे कहूची, so there will be no change in the subject. Okay. So we'll directly write Soma said that Radha was working. Is working will become was working. Clear? Okay, let's move on to next example. If in direct speech the sentence is in present perfect, then in indirect speech that will become past perfect. Okay. Boys said we have no homework to do. Boys said that, देखो we एठी boys माने कहउचंती we, तो indirect speech रे कोन लिखबा? They had no work to do. अरे देखो एठी जदि छुआ जदि बॉयज माने कहबे हम पाखरे काम नै, तमे कहिला बेले कोन कहबो? सेमान को पाखरे काम नै, राइट? So that is the whole motto of indirect speech. Indirect speech is reporting. तमे जहा विषय रे रिपोर्ट करूछ सेमान को हिसाब रे तमे कर्ताटा को बदलै दबो. Clear? Now past continuous will become past perfect continuous. Naman said I was playing. Naman said that he had been playing. Naman said that he had been playing. देखला टेंस केमती बदलुची. या छडा हमें देखिबा वर्तमान केतेटा जिंस जोटा कि डायरेक्ट स्पीच रे थिले कोन हुए, इनडायरेक्ट स्पीच रे ताको हमें कोन बोली चेंज करिबा. ओके, एटा हमें देखिले डायरेक्ट स्पीच रे जदि दिस थिबो, इनडायरेक्ट स्पीच रे दैट विल बी चेंज्ड इनटू दैट. will become would, can will become could, may will become might, these will become those, here will become there, now, then, today, that day, yesterday, the day before, tomorrow will become the day after. This ର ତଳେ ଯୋଗୁଡା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଗୁଡା डायरेक्ट स्पीच रे, that ର ତଳେ ଯୋଟା ଅଛି ସେଟା इनडायरेक्ट स्पीच रे. This left hand side रे जोटा अछि, if that is there in the direct speech, then while converting it into indirect speech we will have to write these things in place of those things. Okay, let's take an example. Sonam said to her mother, I may go to Cuttack tomorrow. एथिरे कोन कोन चेंज करिवा, लेट्स हाइलाइट दोस थिंग्स. देखो प्रथम जिंस सोनम सेड टू हर मदर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जदि सेड टू पखरे आ गोटे जिंस थिबो, देन वी विल हैव टू राइट सोनम टोल्ड, राइट? सेड आ लेखा जीवनी, सोनम टोल्ड हर मदर, कमा उठे दबा, द कमा उठे देले दैट लिखंती. सो सोनम टोल्ड हर मदर दैट, सोनम बीइंग अ गर्ल आई विल कन्वर्टेड इनटू सी. मेटा माइट हे जीवो, वी हैव डिस्कस्ड इट हियर. So Sonam told her mother that she might go to Cuttack. Tomorrow will become the day after. Clear? Next one. He said to his friend, I am feeling tired today. Said to achi, so he told his mother that I tight he being a boy, I will become he. So he told to his mother that he was feeling tired that day. Today will become that day. वर्तमान हमें देखिबा एटा तो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर अछि. किछि इंटरोगेटिव बा प्रश्नवाचक सेंटेंस रे कोन चेंज आसे. ठीक अछि.
प्रश्नवाचक सेंटेंस रे केमती देखिबा तार किछि फार्मूला अछि ताको टिके मने रखो रूल्स अछि जदि प्रश्नवाचक सेंटेंस रे इनडायरेक्टली चेंज करबा को थिबो ताले प्रथमे वी विल राइट सेड व्हाइल ओमिटिंग सेड वी विल हैव टू राइट आस्क्ड एनक्वायर्ड और डिमांडेड इन प्लेस ऑफ दोस राइट आमे ता जगह रे आस्क्ड एनक्वायर्ड और डिमांडेड लिखिबा सेकंड रे देखो जदि यूज इफ और वेदर जदि से सेंटेंस रे इफ और वेदर जते हम चेंज करबा ताले हमें इफ और वेदर लिखिबा क्वेश्चन जदि से क्वेश्चन ता इज एम आर हैव विल ऐसो फॉर्मेट रे अछि ताले हमें ताको चेंज करबा जे चेंज कला बेले इफ और वेदर लिखि देबा ओके थर्ड होची इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस जोटा हमर रिपोर्टेड वर्ब भितरे थिबो रिपोर्टिंग स्पीच भितरे थिबो सेटा नॉर्मल सेंटेंस बा असर्टिव सेंटेंस रे हे जिवो ओके थर्ड होची साइन इफ इंटरोगेटिव इज इंटरोगेशन साइन ऑफ इंटरोगेशन इज रिमूव्ड ता माने जो क्वेश्चन मार्क ता लिखा हे थिबो हमर इन्वर्टेड कॉमा भितरे जे इन्वर्टेड कॉमा भितरे सेटा हम उठे देबा काहे कि असर्टिव सेंटेंस कर देबा नॉर्मल सेंटेंस करबा तेनो तार साइन ता उठी जिवो जो सब क्वेश्चन वेयर हुम व्हाई हाउ एथिरे आरंभ होइतिबो सेही क्वेश्चन रे हमें खाली कॉमा काढी किना ताको एई सब वर्ड को रखिबा एई वर्ड टाको चेंज करिवारे नाही जेमति कि इज एम आर हैज हैव विल एई भले प्रश्न रे हमें ताको उठेला परी इज और वेदर लिखु दिले एई सेंटेंस रे इज वेदर लिखिबा दरकार पडिबनी वेयर हुम डब्ल्यूएच क्वेश्चन फॉर्मेट वाला सेंटेंस रे लिखिबा को पडिबनी खाली कॉमा उठे के सेंटेंस को लिखिबा को पडिबो असर्टिव सेंस क्लियर एग्जांपल देखो सी सेड टू मी डू यू प्ले एनी गेम देखो डू फॉर्मेट रे अछि तो हम डिस्कस करछे डू फॉर्मेट रे थिले इफ किबा वेदर लिखिबा सो व्हाट आई विल राइट सेड टको हम आस्क करबा सो सी आस्क मी इफ आई प्ले एनी गेम ओके सी आस्क मी इफ आई प्ले एनी गेम I said to my friend are you going to join some academy I asked my friend are you is our format रे so if लिखे पड़ियो I asked my friend if he was going to join some academy okay next one the teacher said why are you making noise the teacher said why are you making noise एटा कोन हम the teacher asked why they were तुमको पचारे जाउची बहुत सारे पिला को पचारे जाउची so they were making noise एटी he was भी लिखि परिबो कि काई ना यूरोप सिंगुलर भी यू प्लूरल भी यू so the teacher asked why he was making noise भी लिखि परिबो why they were making noise भी लिखि परिबो देखो प्रश्नवाचक चिन्हटा उठी गला why रहिला आ कोन हम डिस्कशन करथिले एटा assertive sentence हे जिवो why they were making noise एटा assertive sentence हे गला why were they making noise हेतले क्वेश्चन मार्क हेतंता क्लियर ओके नेक्स्ट वन मोहन said to his brother have you taken your breakfast चेंज करिवा मोहन एनक्वायर्ड हिज ब्रदर हैव फॉर्मेट रे अछि त इफ किबा वेदर लिखिबा वेदर ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट ओके नेक्स्ट विल मूव ऑन टू इंपरेटिव सेंटेंस बा जो सेंटेंस रे हमें रिक्वेस्ट करूछु ऑर्डर दोछु एडवाइस दोछु सेही भलिया सेंटेंस रे इनडायरेक्ट स्पीच रे को भलिया चेंज हुए ओके the imperative sentence रे said is changed into requested begged advised ordered etc okay write to in place of that जेमति हमें नॉर्मली चेंज कला बेले that लिखुतिले सेतले इंपरेटिव सेंटेंस थिले that न लिखि किना हमें to लिखिबा एटा बेसिक रूल्स एटा छोटो जिंस जोटा मने रखो चेंज करिवारे इजी हबो ओके लेट्स टेक सम एग्जांपल फादर सेड टू मी पुट द बुक ऑन द टेबल जेते बेले हमें लिखुछु फादर सेड टू मी put the book हम कौन कहबा father said me father told me that नहीं father told me to put the book on the table clear normal sentence रे हमें that लिखितलु किंतु जेतु एटा गोटे imperative sentence हमें एठी to लिखिबा आ किछि चेंज हवार नहीं clear the manager said to the peon bring me a blue pen the manager ordered the peon to bring her a blue pen एटी कोन हला कुछ चेंज करियारे नै खाली हमें टू लिखि देले बाकी सेंटेंस टा as it is रहि जिवो the principal said to the boys do not shout okay next is principal said to the boys do not shout
एटा भी हम सेमती लिखिबा said to the boys जेहेतु स्टूडेंट्स मान को कहा जाउची we can write either ordered or commanded. So the sentence will be the principal ordered or commanded the boys not to shout. You can write either of the two. Either will write the principal commanded the boys not to shout. देखो do not थिले सेटा not to ही जाउची. Normally in imperative sentences we were just omitting the commas and in place of that we are writing to. But if the sentence is in do not format then we will have to write it not to. Okay, clear? Now let's do some of the exercises. You said to him, can you cross the river? You said to him, can you cross the river? You asked him whether he could cross the river. You asked him whether he could cross the river. Right? देखो ये do can नहीं फॉर्मेट रे थिला तने if और whether लिखिबार थिला सेट में हमें ताको assertive sentence कलु प्रश्नवाचक चिन्ह उठेई देलु आउ whether you could cross the river. The clerk said to me, what do you want? The clerk asked me what I wanted. एठी what रहिबो तेनो एठी हमें what रखिले sentence रो assertive sentence कर देलु question मार्क उठेई देलु. Hemant said I went to zoo yesterday. Hemant said that he had gone. When simple past achi, simple past will become past perfect. Then he had gone to the zoo the day before. She said to me, I am not going to school today. She told me that I am not achi, present continuous. Then she was not going to school. Today will become that day. So she told me that she was not going to school that day. Okay. So next example, my father said, I will construct a house here. Will become would, so the my father said that he would construct a house, here will become there. So my father said that he would construct a house there. Mohit said Malini has been waiting for a long time. Mohit said that Malini had been waiting. Has been will become had been. Present continuous will become present perfect continuous will become past perfect continuous. Okay. Mohit said that Malini had been waiting for a long time. Soham said Mr. Singh is teaching me maths. Soham said that Mr. Singh was teaching. It meet a him taku padauthile, he being a boy. Soham said that Mr. Singh was teaching him maths. Our science teacher says gases expands with heat. Our science teacher, it is a universal truth, so there will be no changes in the statement. Here gas will become capital letter. केतेबेले भी inverted भितर starting जिनसेटा को हमें change करवानी. So here gases will become capital G. Gas expands with heat. So our science teacher says that it हम small letter कर दबा gases expands with heat. Sarita said, she said Sarita was collecting stamps. The sentence is in present continuous, while changing we will make into past continuous, while changing we will do it past perfect continuous, right? So she said that Sarita had been collecting stamps. He said to me, are you going to join army? So he asked me if I was going to join army. Are you thila? Teno ame if kiba whether likhibar thila, question mark uthei daba, gote assertive sentence likhiba. Clear? Next one. Raman said to Leela, please help me in this sum. Raman requested Leela to help him in that sum. This will become that. Our normal imperative sentence. Teno ame that jagare to likhila. किछि exclamatory sentence रे example मु नेछि. Next देखो. I said how sad he is. I said how sad he is. It exclamatory sentence. How will we change it? I exclaimed that he was very sad. देखो is अछि present tense रे तेनो past कर दबो. He was very sad. He said hooray, we have won the match. He exclaimed with joy that they had won the match. देखो have अछि present perfect, then we have just simply we have to change the tense. अब खाली exclaim लिख दो exclamation sentence, no other changes. Okay. He says I daily go for a walk. He says that he daily, it's an universal truth. Eta gote habit re achi, practice re achi, so no changes with excepting inserting a that. He says that he daily goes for a walk. Clear? So that's all for direct indirect speech. I hope everybody is clear. Thank you.